Hi everyone, hello, good evening. I am Snehal Wankhede. I am a psychologist and founder of Sarthi. Sarthi is a community we have started to spread awareness about mental health in people. On that point, today we are going to talk about COVID 19 and mental health of children. For that, we have invited Pooja Mehta. Pooja Mehta is a licensed counselor who is working in Mumbai since 6 years now. So, I'm gonna join her now. Please welcome her, everyone. Hi. Hello, hi, ma'am. Hi, how are you all? Good evening. Good evening. How are you, ma'am? I'm good. How are you? I'm good. Thank you. Thank you for asking. So, as I told everyone, Pooja ma'am is a counselor and she is working in Mumbai since 6 years now. So, today we are going to talk about how COVID 19 is affecting mental health of children. So, on that point, do you want to add something, ma'am, to start our conversation? COVID-19, like everyone knows, has been a pandemic that came completely unannounced, right? We were completely unprepared for the severity, for the longevity, for the impact it has had on India, globally, on every section of the society. And obviously, the children have been very badly hit, right? All sections of kids, we're looking across ages, we're looking across socioeconomic strata, we're looking across everything. It's crossing all boundaries. So yes, it has been a very difficult time, very unprecedented times. No one has been prepared for it, right? That is what it was. Now we are yet a year and more into the pandemic, and yet things are not coming back to what we thought was the original normal, which I don't think is going to come. We need to all adapt and adjust to a new type of normal. Lifestyle, yes. Absolutely. A lot of lifestyle, a lot of changes in terms of our thinking, right? In terms of managing our expectations. Absolutely. Okay. To continue, ma'am, here is my first question for today. Children are terrified right now, like in this situation. And what should parents tell children to comfort them and make sure they are informed in an appropriate way? Okay, so I think the first thing that one needs to keep in mind is the age of the child, right? Depending on the age of the child, how you would talk to them, how much information you would impart to them would all depend on that. Secondly, it's very important to remember that parents are the role models for the children. So how we behave, how we talk, how we conduct ourselves, all this is observed by the children. By what we say, what we don't say, how we behave around them, what we say even when they are not present, what we say not to them but to others. Children pick up on all this. So we need to be very conscious about it, right? Very cognizant about it. So we need to use our words carefully. Also, when kids are older, you can sit them down, right? Talk to them about it. Talk to the children, have an open discussion as to what are the children fear. कि बाबा, what are you fearing today? आज आपको क्या हो रहा है? तो वो बोले कि मुझे डर लग रहा है. किस बात का डर लग रहा है? You know, talk to them. Let them feel that they can share their feelings. The minute you shut them down, kids are not going to talk. और फिर वो अपने अंदर रखते हैं, सब बॉटल अप करते हैं और वो बहुत दूसरी तरह से बाहर निकलता है, which is not the right way. You know, aggression में, anger में, वो लोग छुपा के कुछ करते हैं क्योंकि वो हमें बताना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मम्मी डांटेगी या पापा गुस्सा करेंगे. You know, so we have to be very careful about how we talk to them, but at the same time you cannot hide them from things, especially the older kids. उनसे बात करो, talk to them, discuss with them. That's the way forward. And I think a situation is getting more worse by listening news and listening to people talking around us. Absolutely. ये जो मीडिया कंजम्पशन है, आप न्यूज चालू करो तो बस यही, पेपर खोलो तो बस वही. That's all you're reading, COVID related. इतने डेथ्स हुए हैं, इतने हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है शहर में, ये वो.
So somewhere we need to also, देखो सबके पास फोन है, so that news तो you cannot control because kids have their phones with them right now तो all the time. But at least the news that is available on the TV screens, that we can try and control. मतलब वो channels नहीं चालू रखो. You know, let's make the atmosphere more light. Songs चालू रखो, कोई TV serial चालू रखो, कुछ हंसने की light बात, right? Where kids are not being forced to only hear this. It's also, don't talk about it all the time. There is life beyond COVID. It's how we are going to talk about it and accept it and move on. COVID है, ये है हकीकत. मगर अब इस पे ही बात करने से कोविड जाने वाला नहीं है और जल्दी जाने वाला नहीं है. So might as well let's accept it and figure out how best to live in this situation in a positive way. How COVID-19 is affecting children right now, like directly or indirectly? So it's affecting kids, it's affecting everyone. सब affected हो गए हैं कोविड से, मगर kids especially are affected on different levels. Now academically तो obviously it's very, I mean, साल 1.5 साल से बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं. It's online schooling, which is a very big shift from what they were doing. Not only is it a shift for the children to get used to sitting at home और सिर्फ स्क्रीन के सामने दोस्तों से ना मिलना, टीचर से बात ना करना, it's a very big change. A lot of children in our country do not have access to technology. It could be a smartphone, it could be laptop, it could be internet connection. तो उस वजह से भी, you know, they are not able to be at par with other children, right? Across in terms of learning. So that is academically is being affected. फिर socially बच्चे अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे, right? Because of COVID, quarantine, lockdown, fear, we are not letting children go out and meet children. नीचे जाना बंद कर दिया है, बच्चों के साथ खेलना बंद कर दिया है, स्कूल में तो obviously बंद है, तो you know you don't interact with children. तो सोशली इनको जो स्किल्स डेवलप होने चाहिए वो डेफिनेटली 1 साल में जरा देयर हैज बीन अ डिफरेंस, बट अगेन इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. दिस टू शैल पास. हमें ये सोचना है कि ये भी हम पार करेंगे. सो एकेडमिकली, सोशली, इमोशनली बच्चों लोग ने किड्स हैव सीन सो मच in this 1.5 years. They have grown up faster, they have matured faster. Some kids have seen death, they've seen loss, grief, financial issues, lifestyle changes. Children have experienced devastating losses, like उनके parents गुजर गए हैं, उनके, you know, they hear about things like this. So emotionally they have been impacted in a very big way. So that is also a very big factor. Physically also, no exercise. जो बच्चे स्पोर्ट्स खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, बास्केटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, अब जो बोलो वो स्पोर्ट जो फिजिकली बाहर जाने में हम करते थे, all that has come to a stop right now. Children are only sitting in front of the screen, whether it's for school, tuitions, entertainment, कुछ भी. So you know, they are either in front of the screen or sitting in the house. So everyone's physical health has also been affected. And behaviorally also, it has affected children in terms of, there are a lot of children who don't express what they feel. वो लोग बोलते नहीं है, बताते नहीं है, सब अपने अंदर रखते हैं. अब ये हम अंदर रखेंगे तो it is going to come out. It comes out in terms of behavioral, acting out behaviors. हम गुस्सा करें, हम चिड़चिड़ापन करें, right? Sometimes we lie, we shout, we have tantrums. All these are behavioral issues that come up because we don't express. So all this is COVID related right now. Next one is, what are the needs of children right now, emotional needs? Where do I start? There are so many emotional needs of the children that we should be meeting, but obviously in a time like this it is more. ज़्यादातर बच्चों को from parents they require understanding, patience, right? These are difficult times, these are different times. Parents को ये समझना होगा कि ये नॉर्मल नहीं है, तो थोड़ा हमें बच्चों को ज्यादा समझने की जरूरत है, उनसे ज्यादा सख्ती से ना पेश आए. We be a little more lenient with them. All that will help them to deal with the situation in a better way. Sometimes we shout at them, we get angry with them fast. We are only seeing them in front of the screen. What are you doing all the time in front of the screen? अरे मगर बच्चा क्या करे? स्कूल भी ऑनलाइन है, ट्यूशंस भी ऑनलाइन है, बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेल रहा है, वो भी ऑनलाइन है.
मतलब हम सब अगर बंद करवा दे तो बच्चा करे क्या? हम कितने कार्ड गेम्स खेले अपने परिवार के साथ, हम कितने बोर्ड गेम्स खेले. There is a limit. So little more understanding, leniency, and the reassurance that this is a time that will also pass. So let's just go with the flow and not get so worked up about it. बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए बच्चों पे. नहीं, absolutely. And how to keep children away from this stressful and painful situation? As we talk कि हर जगह पे टीवी दिख रहा है और किसी के गुजर जाने की खबर आती है, या फिर बच्चों को नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, ये क्यों घर से बाहर नहीं निकल सकते. So how to deal with it? How to keep them away from this situation? Again, I would say depends on the age of the child. अभी हम छोटे बच्चे हैं, you cannot sit and explain too much. मगर फिर भी we need to understand that kids are very smart. They pick up on the situation, on the vibrations in the house. They know कि कुछ तो अलग हो रहा है. So depending on the age of the child, you decide how much information you want to give. अगर बच्चे बड़े हो तो you sit them down. तो why do you want to hide from them? Be upfront with them and share with them कि ये भाई ये परिस्थिति है, ये situation है और मेरा पेरेंट होते हुए ये डर है. So then you're able to manage the expectations of the child. नहीं तो बच्चा सोचे अरे हम लास्ट ईयर भी समर हॉलिडे में नहीं गए, ये साल तो मुझे जाना ही जाना है. मगर अगर बच्चा समझे कि हम क्यों नहीं जा पा रहे, इफ द पेरेंट्स आर लॉजिकल एंड एक्सप्लेन करे कि भैया इस वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं, चिल्ड्रन विल ऑल्सो अंडरस्टैंड. बट इफ यू आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एंड से कि नहीं जा सकते, अरे मगर क्यों? बट इफ यू आर नॉट विलिंग टू आंसर द क्यों, then children are not going to understand. Right? Now also sometimes you feel के बच्चे छोटे हैं, let's hide, let's not expose them to this so much. उनके दिमाग पे असर होगा, उन्हें उन पे क्या बीतती होगी, हम कभी कभी ये भी सोचते हैं. Right? So again you have to understand that शायद आप ना बोले मगर वो कहीं न कहीं से सुन पा रहे. Right? हम सब जगह से तो उन्हें प्रोटेक्ट या इंसुलेट नहीं कर सकते. So keep the communication channels open. ऐसे करो कि every day या 2 दिन में एक बार आप बैठ के have like a sharing session कि कुछ भी हम बात करें, कोई भी टॉपिक लेके बात करें सब घर पे. तो बच्चे को लगे कि अगर उसमें भी कुछ बात करने की, he wants to share something, he can. उसे डर नहीं है कि मेरे पापा गुस्सा हो जाएंगे या मम्मी चिड़चिड़ हो जाएगी. नहीं, this is a sharing session where everyone can share. पापा भी कुछ बोल सकते हैं, दादी भी कुछ बोल सकती है, भैया भी कुछ शेयर कर सकते हैं और मैं भी कुछ शेयर कर सकता हूँ. अगर मुझे किस बात का डर है, what is the fear? But you have to let them also face certain things in life. This is how life is. You cannot hide and protect them forever. I think they will grow like that, like mentally. Exactly. Also. It will make them stronger. It will make them stronger. It will build their character. It is a very wrong way because you never wish कि बच्चों को ये बीते, so they grow. But now the situation is like this. Yes, exactly. Ma'am, do we need to make changes in our parenting? What they could be? First, you have to understand that there is no one parenting style which is perfect. कोई एक ऐसी style नहीं है जो सबसे best है. We have to constantly adapt depending on the situation and the external circumstances. हमें ज्यादा कंट्रोलिंग भी नहीं बनना है, ज्यादा परमिसिव भी नहीं बनना है, ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं बनना है, ज्यादा लीनियंट नहीं बनना है. We have to manage a balance. It's a balancing act we have to do. So as parents, we have to constantly adapt and change. So when we say, do we need to make changes? It depends on from where you're coming, what is the parenting style you have been using. आप अब तक कैसे पेरेंट थे, क्या स्टाइल यूज कर रहे थे और अभी सिचुएशन के हिसाब से आप क्या चेंज करना चाहोगे और कैसे करोगे. बी ओपन टू इट. Be open to it. That's all that there is. Balance is a must. We have to have a balance. और वो easy नहीं है. हम कैसे टाइट रोप पे चलते हैं ऐसे ऐसे. It's not easy. मगर पेरेंट बनना भी कोई easy तो बात है नहीं, right? So parenting is one of the most difficult jobs today, especially with COVID and lockdown and quarantine. But yeah, कर सकते हैं definitely.
Ma'am, with this question, every parent can relate now. Children are all the time in front of screens, mobiles, TV, or whatever. How should parents deal with it? फर्स्ट यू नीड टू एक्सेप्ट कि आज के जमाने में ये रियलिटी है, बच्चे हैं स्क्रीन के सामने, मगर व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू नो कि बच्चा स्क्रीन के सामने क्या कर रहा है, राइट? वो पढ़ रहा है, वो ट्यूशंस कर रहा है, कभी कभार गेम खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ, एंड एज लॉन्ग एज यू नो कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, किसके साथ बात कर रहा है और किसके साथ देख रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. It is not about the time that they are spending, but it is about how they are spending that time, right? Are they watching inappropriate content? Are they meeting and talking to random strangers on Instagram or on Facebook? What is it? वो ज्यादा important है. So focus on that rather than on अखा टाइम स्क्रीन के सामने, अखा टाइम अगर क्या कर रहा है स्क्रीन के सामने, ये इंपॉर्टेंट है. अगेन टॉकिंग, शेयरिंग, लेटिंग द चाइल्ड नो कि अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो ही कैन रीच आउट टू यू. अगर बच्चा इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पे हो एंड सम रैंडम पर्सन ट्राइज टू रीच आउट टू द चाइल्ड शुड नो कि अगर कोई अजनबी हो तो हमें नहीं कांटेक्ट करना है. वी डोंट वांट टू टॉक टू जस्ट रैंडम पीपल. मगर चाइल्ड डर के मारे मम्मी से ना बोले कि मम्मी ने बोला था इंस्टा पे मत जाना और मैं गया और मैंने ऐसा किया, तो चाइल्ड डर के मारे बोलेगा नहीं और फिर इट कैन लीड टू मोर प्रॉब्लम्स. सो वी नीड टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग एंड कीप कम्युनिकेशन ओपन. इट इज द की टुडे. बच्चा झूठ ना बोले हमें. कंफर्टेबल. यस, एब्सोल्युटली. भी आके बताओ, हम लोग नहीं डांटेंगे या फिर हम लोग नहीं कुछ गलत बोलेंगे आपको अगर आप आके कुछ भी बताते हो तो. Exactly. Much comfortable, they can tell everything. Exactly. बहुत से टाइम बच्चे डर के मारे बोलते नहीं है कि मम्मी ने बोला था ये मत करना और मैंने किया, अब मैं किस मुंह से जाके मम्मी को बोलूं? मम्मी तो डेफिनेटली मुझे डांटेगी, पापा गुस्सा करेंगे, इससे बेहतर मैं बोलूंगी नहीं. मगर वो ना बोलने से leads to more problems. What will be the long-term effects of this COVID-19 situation on children? There are going to be long-term effects and we need to be prepared for that. जैसे हम देखते हैं ना कि फ्लड्स के बाद कैसे वो दूसरी बीमारियां आती है, यू नो, वो प्लेग के बाद, ब्यूबोनिक प्लेग के बाद रैट्स आए थे, डिजीज आई थी और लोग मरे थे. Similarly, we have to be prepared for something called an emotional onslaught. There is going to be. Once COVID hopefully comes under control, children go back to school. There are going to be lots of children who have gone through so much, right? They have experienced so much कि वो अलग-अलग ways में बाहर आने वाले हैं. तो टीचर्स, पेरेंट्स को बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा, बहुत अवेयर होना पड़ेगा. अगर बच्चा पहले शांत था मगर अभी बहुत ज्यादा हाइपर अग्रेसिव हो गया है तो वो किसकी वजह से हो रहा है? अंडरस्टैंड बिफोर शाउटिंग एट द चाइल्ड एंड पुलिंग हिम अप. यू नो, समटाइम्स वो बच्चा पहले बहुत सोता था, अभी तो जरा भी नहीं सो रहा है. पहले कुछ खा नहीं रहा था, अभी कुछ ज्यादा ही खा रहा है. मतलब ये जो सब चेंजेस आ रहे हैं बिहेवियर में, वी नीड टू बी अवेयर. हमें फोकस रहना होगा, उसके बारे में अवेयर होना होगा कि ये किस वजह से हो रहा है एंड ट्राई टू रीच द कोर एंड द ओरिजिन ऑफ द इशू. सो वी हैव टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स देम. अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट children have gone through a difficult time. जो बच्चे ये 1.5 साल पहले थे वो आज बच्चे अलग है. उन्होंने इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है कि उनकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ has reached another level right now. Exactly. So we need to be understanding. Ma'am, there was a question कि अगर if there are disabled children, do we need to deal with them differently in this situation because already they are going through some physical things or something related to diseases or something, and then this thing comes up. Disabled or any other physical diseases they are going through already. Do we need to deal with them differently? I think you will need to deal with them not differently but more gently, with more understanding, because they are obviously going through much more than what a normal age appropriate child is going through. Yeah. Along with the emotional
upheaval of COVID, they are also suffering from some sort of a physical handicap or some sort of a physical challenge. So yes, those children will be facing more issues. So we just need to be more understanding and see how best we can attend and address their needs. It is very difficult as a parent at a time like this. Parents पे बहुत सा बोझ आ जाता है. A lot of responsibility comes up on the parents. क्योंकि बच्चों की इमोशनल हेल्थ, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन, मतलब हम सब साइड से हम झेल रहे हैं अभी. मगर इन सब में हमें मेंटली पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग और काम रहने की बहुत ही जरूरत है. अगर हम ब्रेक डाउन हो जाएंगे, हम बात बात पे गुस्सा हो जाएंगे, वी लूज आवर पेशेंस, लूज आवर कूल, वी आर नॉट हेल्पिंग एनीवन. वी आर नॉट हेल्पिंग एनीवन. हम अपने आप को भी नहीं हेल्प कर पा रहे और हमारे आजू बाजू भी लोग हैं, हम उनकी भी हेल्प नहीं कर पा रहे. मुझे एक बात सिर्फ बोलनी थी कि ये कोविड के टाइम में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो, हम ये सब मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, हाथ धोना, ये तो सब हमें करना ही करना है. मगर इसके साथ हमें जो करना है वो हैज टू बी कम्स फ्रॉम अ होलिस्टिक लेवल, राइट? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये तो हमें करना है, मगर हाउ डू वी चेंज आवर माइंडसेट, हाउ डू वी चेंज आवर थिंकिंग टुवर्ड्स कोविड. हम हर बात में डर, पैरानोया से जिएंगे तो हम जी ही नहीं पाएंगे. सिचुएशन ये है, मगर आर वी गोइंग टू नॉट लेट द चिल्ड्रन गो आउट एट ऑल? क्या हम घर के बाहर भी नहीं स्टेप आउट कर रहे? लाइफ डज मूव ऑन, life will continue, life has to continue, right? How do we continue with life with all these precautions in place is what we have to do. You cannot say कि तुम जाओ ही मत completely, because that is not a workable option. मगर किस तरह से हम ये सब precautions करके हम बाहर निकल सके, ऐसा हमें सोचना है. हमारी सोच इस तरफ होनी चाहिए. We can't complain about things, like just complaining about things. Absolutely. And when we start to complaining, then we should see कि भाई हमसे भी कितने लोग हैं जो हमसे भी बहुत बुरी स्थिति में है. We have to practice gratitude and be thankful and appreciative for what we have. We are much better off than others. हम पेपर आज खोले और देखे कि someone is cycling 400 kilometers to get an oxygen cylinder. Someone is doing this much for their children. मतलब उस हिसाब से तो हम काफी लकी माने जाएंगे. So let's be grateful for what we have. Let's be thankful for what we have, and let's not complain about small trivial things. हमारा Netflix का सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, हम आज स्विगी से ऑर्डर नहीं कर पाए. मतलब in the larger scheme of things ये बातें बहुत ही ट्रिवियल हो जाती है. लोगों को तो खाना नहीं मिल रहा है, हमें उसके बारे में सोचकर we have to be grateful कि भाई हम तो अच्छे हैं. Yog Dokne has question, suggests something for parents. They are going through a lot, but at the same time they have to handle children. How can they maintain their mental health? So to take care of your mental health, it's very important कि we need to be, one, physically rested. अगर हमारा शरीर थका हुआ है, हमें नींद नहीं होती है, हम बराबर से खाते नहीं है, then emotionally we are not able to deal with whatever comes our way. So it's important कि physically we eat well, rest well, take care of the physical part of us. Secondly, surround yourself with positive people. Don't surround yourself with people who are only talking negative. अरे यार आज तो ये हुआ, आज तो मेरी मौसी गुजर गई, अरे उसके मेरे चाचा को तो हॉस्पिटल में बेड ही नहीं मिला. हम अगर ऐसी ही लोग से ऐसी ही बातें करेंगे तो हम ये नेगेटिव स्पेस में रहेंगे. कट देम आउट फ्रॉम योर लाइफ फॉर सम टाइम, या उनसे बात मत करो. आपको मालूम है कि अगर ये आदमी सिर्फ ये नेगेटिव ही बात करे तो डोंट टॉक टू सच पीपल. डू थिंग्स ऑल्सो दैट मेक यू हैप्पी. मतलब 24 घंटे में दिन में हम आधा घंटा तो अपने लिए ले सकते हैं, जो भी हमें खुशी दे. It could be watching a silly TV program, it could be talking to your mother on the phone, it could be talking to a friend and just venting out your frustration, it could be anything. मगर अपने आप, अपने लिए आधा घंटा is important. Exercise is also very important. लोग बोले कि हाँ ऐसे टाइम में एक्सरसाइज कैसे है, मगर कभी कभी टाइम इतना है कि लोग दिन में 2 बार एक्सरसाइज कर रहे हैं आज. मगर एक्सरसाइज करने से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो जो feel good hormones, dopamine and all, it makes us feel good. When you sweat it out, a lot of our
aggression, negativity gets channelized outside, and then we are left feeling calm. So it's important to do certain things for ourselves, because जैसे हम प्लेन में बैठते हैं, वो लोग बोलते हैं ना ऑक्सीजन मास्क आता है तो पहले अपने आप पे डालो, फिर बाजू वाले पे डालो. Similarly, for mental health and emotional health, take care of yours first. Then only you will be able to be of help to people around you. So do certain things. Pursue a hobby. Taking time for yourself. Pursue something that you like. अभी आपको पेंटिंग का शौक है तो दिन में आधा घंटा, 2 दिन में एक बार हम कुछ कर सकते हैं अपने लिए. Maintain a diary. Write down what you feel. You know, sometimes we are so overwhelmed. Take out जो अपने अंदर है, सब लिखते रहो, अच्छा और बुरा. Once we write it down, no, it is not as scary in our mind and it doesn't have that much power over us. In my opinion, having a routine, like fixed routine, like it also helps. If you are just doing some work randomly and just sleeping around all the time because you are free now, you don't have to go anywhere, so it won't help us. Absolutely. A routine is very, very important. Waking up time, sleeping time, meal time, break time, time to spend with family. अगर ये सब अच्छी तरह हम slot कर सके दिन में, there is a purpose in life. There is a structure. There is a discipline. Then you wake up knowing कि हाँ मुझे आज ये करना है. नहीं तो हम सुबह को उठ के अरे आज क्या करे, कुछ करने को है नहीं, फिर बस वही सब थॉट्स आ जाते हैं मन में. हाँ, आइदर सो जाओ या फिर बस टीवी के सामने बैठ के बस 6 घंटा टीवी देख लो. एक आध दिन आप ऐसे करो इज येट ओके, मगर अगर ये रोज का प्रैक्टिस हो जाए, दैट बिकम्स अ अनहेल्दी पैटर्न. Ma'am, I want to know how to control emotional breakdown in this lockdown as everyone is so frustrated. Winter so. It's very important to have a good support group. Have someone who you can share and vent with. It could be your mother. It could be your best friend. It could be nobody. It could be going in the mirror and saying it to your reflection. Crying it out, shouting it out. Remove it from your system. Write it down. मगर we need to express it. अंदर रखने से फ्रस्ट्रेशन और ही बढ़ता है, और जैसे वोल्केनो की तरह एक दिन ऐसे फूटेगा तो it is a very ugly scene. Then we say things we don't mean, we do things we regret after doing them, but it's too late. Don't let it reach that boiling point कि कुकर की सीटी फूटे और सब सत्यानाश हो जाए. Let's not wait for that. Slowly, each time you're frustrated, deal with it, express it. And by expressing it, I'm not saying you have to attack someone and say you are doing like this और आपकी वजह से मुझे ये नहीं, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन फील महसूस हो रही है, मैं क्या करूं, मैं बहुत अपसेट हूं क्योंकि आपने मुझसे ऐसे बात की. Talk about your feeling and take responsibility for it. If you are going to blame game and point fingers, then it's going to be complete war because everyone is going to be blaming. How can we manage irritation among children, which I find more among them during this pandemic era, as they are not able to explore themselves sitting around home? Done is, बच्चे एक ही घर में रहते, घर बहुत बड़े नहीं होते, तो you know स्पेस की वजह से हम एक दूसरे के we are coming into each other's faces, intruding into each other's space, so that happens. So sometimes what you can do is make it like a play game thing. You know, make them do exercise like a fun, like a competition or like a mock thing. Don't make it into a task कि आज exercise करना है, तो फिर बच्चों नहीं करेंगे. चलो आज हम एक गेम खेलते हैं. Let's see के spot jogging कौन सबसे फास्ट कर सकता है. अगर हम कुछ ऐसे फिजिकल एक्टिविटी करें, तो एक तो बच्चों की जो एनर्जी रहती है, जो हम बाहर अभी नहीं यूज कर पा रहे, it can go away in this play way method also. Secondly, you know, try and divide that time up. Right? If you can spend some time with one child, at that time you give the other child something else to do, that he does not need you. So you will have to, it is not easy. I'm not saying it's easy. Because we have lots of responsibilities. घर का काम है, kitchen का काम है, husband का काम है, सास ससुर का काम है. You know, we feel frustrated, but we have no option but to think of such innovative ways of trying to engage the children. उनको छोटे छोटे आर्ट प्रोजेक्ट्स दे दो कुछ करने के लिए. Praise them, appreciate them. Simple things. It doesn't have to be some great big 3D model project बनाना नहीं है, मगर जो घर पे है हम कुछ ऐसा कर सकते हैं.
Ma'am, is there any of your personal experiences, like counseling experiences of this pandemic situation, if you want to share? Like, from your perspective, how is this situation right now? Right now, it's again how you view it, right? Pehle it was difficult, but then when you accept कि भाई यही है, हमें हमारी थिंकिंग चेंज करने की जरूरत है. मेन वही है, क्योंकि सिचुएशन चेंज नहीं होगा, राइट? वी हैव टू चेंज आवर थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन. इफ वी चेंज आवर, पहले हमारी थिंकिंग क्या थी? अरे ये कोविड कहाँ से आ गए साले, ये चाइना वाले कहाँ से हमको ऐसे कर दिया, ये वो. फिर हमारे इमोशंस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सब हो जाता है, राइट? बट इफ वी लुक एट इट के ये हमारे हाथ में नहीं है, COVID is not in my hands. How do I deal with it? This is a time I get to do things that I did not have time to do earlier. I can have time to spend time with my family. I can cultivate a habit. Maybe if I want to think of a new job, I can figure out how I'm going to do that. Look at it positively. If you change your thinking, then you will be able, subsequently your emotions will change about it. Then the frustration will be replaced by excitement for something new. Hope, faith. This is how it is. मगर हमें हमारी थिंकिंग चेंज करने की जरूरत है. वो सबसे इम्पोर्टेंट है ये पैंडेमिक में. Look at the situation from different perspectives. Don't only look at it from your perspective. If you look at it from other people's perspectives, you will realize that I am not that bad off. There are other people who are worse off than me, and then you feel pity, you feel sympathy, empathy, gratitude, and these are the feelings and emotions we need to cultivate right now. Exactly. I think people are getting into more worse situation than you are right now. कितने भी आप खराब सिचुएशन में हो, बाहर देखोगे आपसे ज्यादा खराब सिचुएशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी इस टाइम पे. सही बात है, सही बात है. I think that was it, ma'am. Thank you so much, ma'am, for sharing your such experiences, and thank you for viewers for joining us. I hope to come up with you again with some other topics. Sure. Thank you so much. And for those, y'all can follow me on Anytime Counselor, and you will get other tips also. So you could follow me, and that would be great. And thank you all, and thank you Sarthi for asking me to be a part of this mental health awareness. Thank you so much. Thank you. Okay. Bye. Yeah. Stay healthy, stay safe, everybody. Thank you.